Good afternoon and good evening, viewers of my YouTube channel, Spiritual Talks, and other social media friend, those who will join me. And let me welcome Karthik Sundarajan in today's Spiritual Talk show. Karthik, welcome to you again. It's my privilege to have you in my talk show again after some. Thank you, Tribhuvan. Yeah. So, Karthik, let's start the today's topic, which is we are talking karma management. Uh, to give a right prospect to the viewers, karma is all about a person has done, is doing, and will do in future. So, straight away going to the question, karma management, which is a very seems to me very interesting topic, and there is a saying in English which is as you sow you shall reap. इसको अगर हिंदी में बोलूं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे. So can you kindly explain what is karma to my viewers? Thank you, Tribhuvan. Thank you, viewers. Thanks for setting the context and putting the right question to move forward in this direction of our topic called karma management. So let's understand ये कर्मा शब्द है इसका क्या मतलब है. तो अगर आप वेदर हम अंग्रेजी में ले लें तो अंग्रेजी में कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. Correct. यदि हम पुराणों में देखें या उपनिषद में देखें, ओके, तब से लेके इवन इफ यू टेक द साइंटिफिक मॉडर्न डे साइंटिफिक बुक्स, कर्मा शब्द का अलग अलग लोगों ने अलग अलग मतलब मीन्स अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है. बट उसका अगर सेंट्रल थीम लिया जाए तो कर्मा इज अ वर्ड दैट मीन्स रिजल्ट ऑफ अ पर्सन्स एक्शन as well as the action itself. Matlab, what is the action taken by the person and what is the outcome of that particular action. Correct. It is a term which is called as cause and effect. So according to the theory of karma, what happens to a person happens because that is what they had caused it with their action. Absolutely. Which is what you said, जैसा बोगे वैसा काटोगे. Correct. So good. So viewers, basically थोड़ा हिंदी में मैं बता दूं इसको थोड़ा सा कि ये जो हम स्पिरिचुअल टॉक्स करते हैं उसका रीजन भी मेरा यही है, हम लोगों का, मेरा और कार्तिक का, कि स्पिरिचुअलिटी को अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट प्रोस्पेक्ट में देखूं, और बहुत सारे आपको चीजें जो है इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो उनकी जो थ्योरी होती है, जो उनका तरीका होता है, उसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो हमारा कोशिश, मेरा और कार्तिक का कोशिश ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई वे में अपने डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, एवरीवन इज अ बाय बॉर्न स्पिरिचुअल. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग लाइक कि आप कुछ पद्धति को फॉलो करेंगे तो ही आप स्पिरिचुअल हैं. दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ इट. तो हमारी लाइफ को हम स्पिरिचुअल लॉज में हम बधे हुए हैं, हर इंसान बधा हुआ है, वो हम उसको कैसे निखार सकते हैं, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ही कार्तिक इज ट्राइंग टू बी सिंप्लीफाई ऑन अ कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल जागरण और वो सब चीजें ना करते हुए, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग ऑन द सिंपली वे. So same thing, Karthik, what you said, it's very clearly defined karma in the if you look at in a Gita as well, जहां पे एक जो है श्लोक है, हमारा जो भगवत गीता का जो चैप्टर है 3, 4 और 5 और 18, इसमें बहुत डिटेल में कर्मा को कर्मा योगा को काफी समझाया गया है. तो उसमें भगवान कृष्ण ने ये कहा कि अ पर्सन कैन नॉट अटेन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बाय रिनाउंसिंग एक्शंस, बिकॉज इवन ब्रीथिंग इज एन एक्शन. तुम जो भी काम कर रहे हो, जो भी हम काम कर रहे हैं, इवन सांस ले रहे हैं, अभी आपके साथ मैं लाइव में बैठा हुआ हूं, दिस ऑल आर द कर्मा, राइट. तो इनका परित्याग कोई भी इंसान नहीं कर सकता है. जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजायर से इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, गीता में भी कहा गया है कि यू कैन नॉट रन अवे, यू हैव टू डील विथ योर कर्मा.
which you do, everything is a karma. So going to straight away, Karthik, the next question, uh, can karma be managed in our life? So that is my next question. Good question, Tribur. Yeah. So before I answer that question, let me share a small story. Mm-hmm. There Sure. was one potter, the Kumhar. Okay, Hmm. so he takes a handful of wet clay and he puts this potter wheel. Okay, potter wheel के ऊपर जो है, he puts the clay and he is trying to make the chilam. Hmm. Okay, Hmm. chilam जिसे कहते हैं that clay smoking pipe जिसके अंदर you fill the tobacco Hmm. and then you do the uh, smoking. Okay, Correct. so as the potter is trying to make the chilam with the wet clay, Hmm. okay, Hmm. his wife comes and asks him Hmm. what he's doing. So the potter tells his wife that winters are still on, so there is a demand for chilam. That's why I am making chilam, okay, so that we can make good money out of it. Hmm. So wife says that that is one way to look at life. There is another way to look at the same thing. Summers are coming shortly. So Hmm. when summers will come, there will be huge demand for surahi, Hmm. that earthen pot. Hmm. Okay. Hmm. So instead of making chilam, why don't you make surahi? Hmm. So Correct. Potter saw sense in what his wife was telling. So what he did was, whatever chilam he was making, he Hmm. breaks the entire stuff and then prepares that back to the clay, Hmm. and then now he's trying to make surahi out of it. Hmm. So as he is trying to make surahi out of it, Hmm. the Hmm. Hmm. mitti asks the potter, Hmm. Vijay, what you are doing? Potter says that I am now making surahi out of it. I'm trying to make surahi out of you. Hmm. So the clay asks him once again, Hmm. then what were you doing earlier? Hmm. The person said that earlier I was trying to make chilam out of you. Okay. Ah. Now, instead of chilam, I am making surahi out of you. Hmm. So the king asked, why did you change your mind? Why did you change? Ah. So he said, मैंने अपना विचार बदल दिया. Hmm. Change the thought. Exactly. Hmm. So it seems the clay told the potter, तुमने विचार क्या बदल दिया? Hmm. मेरा तो आकार ही बदल गया. Hmm. मेरी जिंदगी बदल गई. Hmm. पहले खुद में अंगार भरती, Hmm. औरों में अंगार भरती, Hmm. दुनिया में अंगार भरती. Hmm. अब खुद शीतल रहूंगी, Hmm. औरों को शीतल करूंगी, Hmm. दुनिया को शीतल करूंगी. Hmm. सही. तुम्हारे विचार बदलने से हाँ. मेरी जिंदगी बदल गई. Correct. Let me repeat the same thing in English. Hmm. Okay. Hmm. You changed your thought and my life got changed. Hmm. True. As Chilam, I Hmm. would have filled myself with fire and smoke. Hmm. I would have filled others with fire and smoke and filled the whole world with fire and smoke. Hmm. Now, as southern pot, I will fill coolness in me. I Hmm. will fill others with coolness and the whole world with the coolness. Hmm. So that's the power of one's thought. Hmm. Now, let me come back to the question on karma. Okay, whether how karma can be managed. Hmm. So, karma consists of three components: Hmm. desire, Hmm. thought, हाँ. action. Correct. The potter first had the desire to make the chillip, Correct. then he released the thought, which resulted in the action, which led to the chillum formation. Correct. Then his wife came and intervened and said, why you are making chillum? Why not you make surai? His thought changed and the action changed, and that's how his karma got changed. Correct. Correct. Absolutely. Mm, So I think these are the three exactly. key things. These are the three key things. Uh, and
आई एम जस्ट रिकॉलिंग अगेन बिकॉज आज का टॉपिक ऐसा है कि भगवत गीता से बहुत चीजें निकल के आ रही हैं. सो टुडेज here also there was a Bhagavad Gita saying in chapter 5 verses 14. वहां पे लिखा गया है, मैं एग्जैक्टली कोट अनकोट दैट श्लोक, उसमें बोला गया न न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्ते. Means God does not decide the karma each one of us should do, nor does he induce people to act, nor does he create fruits of any action. Each person acts according to his वासनाज. तो वासनाज को ही इसमें बताया गया है, which is past and present perception of your mind and created by your desire. So that's how in Bhagavad also, and you have very simply relate with the story, and really fantastic. I hope the viewers will able to understand these easy terms. So straight away I am going to the next question, Karthik. Now when we said these three things are the key things which will determine the karma: desire, thought and action. Now my next question is, to understand karma, can we manage, can you throw some more clarity on how karma can be managed in our day-to-day life? Definitely. Okay. So, a few minutes back, I told you karma consists of three components: Correct. desire, thought, action. Hmm. So there are three ways by which I can manage my karma. Okay. Either I manage my thought, or either I manage my desire, or I manage my thought, or I manage my action. Okay. Any of the three, if I manage, I can manage karma very well. Okay. True. Either I manage my desire. Okay. So from the beginning itself, I get only the right desire. I ensure only positive thoughts come to me. And so all that which will emerge out of it is only good karma. Okay. But at the same time, human being as we are, okay, this thing called managing the desire, it's a easier said than done. Okay. और rather I would say बहुत ही difficult approach है. Okay. Human beings हैं हम. Okay. हमारे desires हमेशा positive रहेंगे इसका कोई guarantee नहीं है. कभी कभी negative भी हो सकता है, कभी कभी bad भी हो सकता है. Okay. Absolutely. हमारे desires negative हो, हमारे desires bad हो, तभी हमें कर्मा मैनेज करना पड़ता है अपने को. Correct. We can't run away from our karma. Absolutely. Okay. So first thing is managing one's desire. Okay. दूसरा है managing one's thought. Irrespective of how the desires are, I can still manage that desire with my thought and still manage my karma. However good or bad desires are, unless I back it up with the thought, it remains an empty thought by itself, and an empty desire by itself which doesn't have the backing of the thoughts will never result in a karma formation. Okay. I can desire anything, but unless and until I come up with the thought on how to accomplish the desire will never be accomplished. True. Okay. So if the desire is positive, good and progressive, I can back it up with thoughts on how do I accomplish that desire, and I can come up with a strong reason on why I should go and accomplish it, and I accomplish the desire. Okay, that is one way. True. Apart from that, अगर desire negative हुआ, desire bad हुआ, I can come up with thought on why I should not go in the direction of the desire, and by the power of my thought, I can change my action and I can go against the desire. तो अगर हम अपना जो पॉटर के स्टोरी में भी जाते हैं, तो क्या था कि उसका डिजायर था चिलम बनाने का. उसका डिजायर तो था चिलम बनाने का, लेकिन उसकी वाइफ ने उससे कहा
कि तुम चिलम बनाने से अच्छा तुम सुराही क्यों नहीं बनाते. हम्म. So instead of making pipe, he हम्म. ended up making earthen pot. Correct. Okay. So desire was something, what he made was something else. हम्म. Okay. So that is second approach, which is managing one's thought. हम्म. Third approach is managing one's action. हम्म. So along with my thought, I can have a control towards how I go towards accomplishing the desire. हम्म. Okay. I can use the same approach to stay away from that desire. हम्म. एक बहुत ही पॉपुलर कहानी है, okay, हम्म. which many people have used हम्म. in many occasion for multiple reason. Okay, हम्म. so एक एक विलेज था, उस विलेज में एक स्वामी जी रहा करते थे. हम्म. एंड उस स्वामी जी के पास ऐसा था कि एनीबडी गोज एंड आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम, हम्म. ओके, हम्म. स्वामी जी हैज आंसर फॉर इट. हम्म. ओके, हम्म. सो बट उस स्वामी जी की एक आदत थी. हम्म. ओके, एंड द हैबिट वाज हम्म. कि डेली वो ध्यान पे बैठते थे हम्म. और जैसे खोलते थे, हम्म. उन्होंने जो है कोई भी डिजायर व्यक्त किया, हम्म. जो भी डिजायर व्यक्त किया, डिजायर खाने का, हम्म. पीने का, हम्म. कुछ भी डिजायर व्यक्त किया, तो हम्म. लोग भाग भाग के जाते थे और जो भी मांगता मांगता था वो लेके आते थे. हम्म. और जैसे ही स्वामी जी उसे खत्म करते, वो जो है लोग उनसे प्रश्न पूछते और उनके प्रश्न का जवाब मिल जाता था. हम्म. तो एक दिन जैसे स्वामी जी ने जो है आंखें खोली, हम्म. उन्होंने पूछा, कैन यू गेट मी किंगफिशर बियर. ओके. एवरीबॉडी वर शॉक्ड कि हाँ. स्वामी जी ने जो है किंगफिशर बियर कैसे मंगवा लिया. हाँ. तो लोगों को तो ऐसा था कि जो को अपने अपने सवाल से मतलब थे. हम्म. इट डिड नॉट मैटर टू हिम कि हम्म. स्वामी जी क्या मांगते हैं, क्या नहीं, स्वामी जी क्या नहीं मांगते. ओके, हम्म. हम्म. भाग भाग के गए लोग, किंगफिशर का बीयर का क्रेट क्रेट पे क्रेट उठा के लेके आ गए कि हम्म. स्वामी जी ले लो क्रेट बीर. स्वामी जी ने जो है हाँ. बीर का ढक्कन खोला, हाँ. ग्लास में डाला और हाँ. गिलास को सामने रखा. हाँ. सामने रखने के बाद अपने दोनों हाथ यूं फोल्ड करके बैठ गए. हम्म. स्वामी जी ने कहा हम्म. कि माय माइंड, यू डिजायर्ड फॉर बियर, हम्म. आई गॉट यू. हम्म. You desired for beer, I got you. हम्म. But if my hands don't cooperate, हम्म. will it reach inside? हम्म. So there is a very important lesson to all of us. हम्म. We may not have complete control on our desire, हम्म. but we can still exercise control on our action. हम्म. And for that, we need to have a strong value system that tells me what is right and what is wrong. हम्म. And with that, with the help of a strong value system, हम्म. I can clearly go and and validate whether my desire is good or bad, हम्म. desire is positive or negative, हम्म. whether the desire is going to take me towards my progress or take me away from my progress. हम्म. And based on that, I can come up with the appropriate thought and action, हम्म. which हम्म. enables me to either fulfill that desire or stay away from the desire. हम्म. Correct. So, Karthik, the important thing is, as you said, rightly said, coming desire, whether there is a no form of desire, like it is a positive, it is a negative. Desire is a desire. And Hmm. any human, you will see this is very natural to get the desires, right? अभी उसको जो important यहाँ पर जो आपने बताया is important is controlling your thought. अगर आपने अपना थॉट कंट्रोल किया, देन ऑब्वियसली योर एक्शन विल बी कंट्रोल्ड. अगेन Hmm. आई एम रिमेंबरिंग इवन इन द गीता, गीता में चैप्टर 6 वर्सेस 5, चैप्टर 6 वर्सेस 6, चैप्टर 6 वर्सेस 7, यानी कि चैप्टर 6 में लगभग 4 या 5 वर्सेस हैं जहां पर दे हैव गिवन अ वेरी डिटेल controlling, how to control your thoughts, how you are control your mind. So Krishna tells Arjun that by controlling the mind, he can attain complete perfection in life. He makes Yes. clear that without
mind control, no one can attain peace and bliss in the life. तो ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है कार्तिक. द की थिंग इज आई थिंक कंट्रोलिंग द थॉट. माइंड क्या है? माइंड इज नथिंग, इट्स अ फिल ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स एंड आवर थॉट्स, राइट? सो Yes. उसको कंट्रोल करने की बात हमारे गीता में भी बताई गई है. सो तो वेल सेड. आई थिंक viewers will able to understand why this is very important when you want to control your action, you want to build a good life. तो ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? गोइंग टू द नेक्स्ट रिलेटेड टू दिस सेम थॉट, कार्तिक, द नेक्स्ट क्वेश्चन is, even though we feel we can take control on our karma, so do you think that are we not a victim of our karma? Um, Thanks, Ribon, for the question. So there are two ways by which one can look at one's life. Either I can use my today's maturity to dissect my yesterday. Correct. I can use my today's आज की मेच्योरिटी से मैं अपने कल का जो है कल का मैं जो है पोस्टमार्टम कर सकता हूँ और ऐसा कर सकता हूँ, या फिर आज की मेच्योरिटी से को लेके मैं अपने आने वाले कल को मैं कंस्ट्रक्ट करूं. ओके, दोनों चॉइस मेरे पास है. करेक्ट. ओके, एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल अबाउट कर्मा आल्सो. Hmm. व्हेन आई लुक एट माय लाइफ विद पास्ट ओरिएंटेशन, Hmm. आई फील मेरा जो आज है Hmm. वो मेरे कल की वजह से हुआ है. Absolutely. मतलब Hmm. आप क्रूड लैंग्वेज ले लिया जाए, ओके, तो Hmm. yesterday's food is today's shit, Absolutely. and what I eat today will determine my tomorrow's shit. Correct. तो कल मैंने जो अगर कल मैंने खाना, ओके, अगर जो है कल मैंने खाना कुछ भी उठा के खा लिया तो आज मेरा पेट खराब होगा. Hmm. दैट इज वन वे टू लुक एट कर्मा. या Correct. फिर आज मैं परहेज के साथ खाना खाता हूँ, Hmm. वही चीज खाऊं जो मेरे सेहत के लिए अच्छा है और वो चीज को अवॉइड करूं जो मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मेरा जो कल है, कल मेरा जब मैं सुबह जो है जब मैं बैठूंगा, ओके, Hmm. Hmm. तो जो है आराम से जो है साफ होगा. Hmm. सो व्हेन आई लुक एट माय टुडेज लाइफ विद पास्ट ओरिएंटेशन, आई फील माय टुडे इज अ विक्टिम ऑफ माय पास्ट. Hmm. और ऐसी परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता. Hmm. Hmm. यदि मैं ये सोचूं कि Hmm. जो आज आज मैं जो करूंगा, Hmm. ओके, आज मैं जो करूंगा, ओके, इवन दो माय टुडे वाज एन आउटकम ऑफ माय यस्टरडेज पास्ट, व्हाट आई डू टुडे विल Hmm. डिटरमाइन माय फ्यूचर. Hmm. ओके, तो Correct. ऐसे नजरिए से अगर देखता हूं तो आई डोंट फील आई एम अ विक्टिम ऑफ माय कर्मा, आई फील आई एम द मास्टर ऑफ माय कर्मा. Absolutely. And I have the complete control on how I work towards constructing my tomorrow's karma. Absolutely. True. Well said, Karthik. That is very much true as well. आपका कल का रिफ्लेक्शन जो आप आज कर रहे हैं वो होता ही होता है. तो that is very much true. Going to the next question, Karthik, as we said that emotions play a key role in deciding our actions, right? So my next question is, what role does emotion have in one's karma? Actions को कैसे drive करता है? Emotions, they play a great role in deciding one's karma. Hmm. Okay, how Hmm. one feels, how one feels about one's desire determines Hmm. whether my thought and action Hmm. will go for achieving that desire or will not go towards achieving that desire. Hmm. Hmm. So नेगेटिव इमोशंस जो होता है Hmm. वो हमेशा पॉजिटिव इमोशन से ज्यादा डीप होता है. Hmm. And our subconscious mind, okay, doesn't understand whether the emotion is positive or negative. Hmm. What our subconscious understands is क्या मेरे डिजायर, क्या मेरे इमोशंस डीप हैं या शैलो हैं.
अगर डीप इमोशंस है तो whatever happens, the subconscious will conspire to make that happen again and again in my life. So my emotions can be negative, but my desire can be positive. And if my emotions are negative and my desire is positive, it will lead to my progress. इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है? परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है और मेरे पूरे टीम का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज मेरा परफॉर्मेंस का जो मुझे आउटकम मिला है, ओके, मुझे परफॉर्मेंस का आउटकम मिला है, मेरे टीम को मुझसे अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है और मुझे उतना अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिलता। देयर आर टू वेज टू इट, या मैं अपने टीम के प्रति जेलस फील कर सकता हूँ, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट जेलसी, ओके, मेरे अंदर एक रिवेंज भी आ सकता है, एंड बिकॉज जेलसी एंड रिवेंज बाय इटसेल्फ हैव very deep emotion, I can still come with a desire which is progressive in nature, and the desire can be कि मेरा जो कल का परफॉर्मेंस, मेरे कल के परफॉर्मेंस के बलबूते पर आज मुझे इंक्रीमेंट औरों से कम मिला है, मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा, मैं ऐसा परफॉर्मेंस पार करूंगा, ओके, दैट अगले साल जब मेरी इंक्रीमेंट की बारी आएगी मुझे औरों से बेटर इंक्रीमेंट मिलेगा। करेक्ट। बिकॉज ऑफ माई यस्टरडेज परफॉर्मेंस आई वॉज गिवन लो इंक्रीमेंट टुडे, I will perform so well this entire year that next year when it comes to increment calculation, I get much better increment than all of my team members. Now ऐसा desire, because in this particular situation emotion negative था, लेकिन desire progressive है, Absolutely. तो क्या होता है, I can use that, I can leverage on that desire and the emotion and back it up by thought and action to achieve and accomplish something which is higher, and the possibility of accomplishment that is very high. Let me also share a negative example in this regard. I have a fight with you, I have a fight with you, and you end up slapping me. Because you have slapped me, okay, you have created a karmic cycle and a karmic cycle of negative karma. Okay, now I have two choices in front of me. One, I slap you back and resolve this issue. आपने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं आपको एक थप्पड़ मार देता हूं, तो आपका जो नेगेटिव कर्मा का साइकिल आपने चालू किया वो साइकिल खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा नेगेटिव कर्मा का साइकिल चालू हो जाएगा। दूसरा अप्रोच है, और वो अप्रोच ये है कि आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं आपको क्षमा कर देता हूं, मैं आपको क्षमा कर देता हूं। क्या होगा कि मेरा नेगेटिव कर्मा का साइकिल कभी चालू ही नहीं होगा, लेकिन आपने जो नेगेटिव कर्मा का साइकिल चालू किया वो कर्मा का साइकिल चलता रहेगा। वो कैसे रिजॉल्व होगा, वो अपने आप कोई और तरीका सोचेगा, आपको किसी और तरीके से आपको दंडित करेगा आपकी गलती के लिए, और वो साइकिल खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा साइकिल चालू नहीं होगा। तो जो भी आज में हमने बात किया है, इसको हम आज से एक साल पहले हमने जो है ऐसा एक टॉपिक पे डिस्कस किया था, माई लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। तो यदि आज हमने जो भी बात किया है, आज हमने जो भी बात किया है, इसको उस टॉपिक के साथ जोड़ा जाए, तो even what we have spoken today also summarizes into the same thing called my life is my responsibility. By taking control of my desire, by taking control of my thought, and by taking control of my action, I take complete responsibility of my karma. And by taking complete responsibility of my karma, मैं अपने लाइफ पे कंट्रोल ले लेता हूं। करेक्ट, वेरी ट्रू कार्तिक। एंड
even according to Bhagavad Gita, human suffering is real but not permanent, and it is caused by faulty thinking, perspective, and beliefs and attitudes. It depends upon way we perceive the things and react to them. In Bhagavad Gita, Lord Krishna asked Arjun not to be emotionless, as emotions are required for without them one is like a robot. But at the same time, don't get too carried away by your emotions. So use your emotional intelligence to tackle the worldly problems. It's defined majorly in Gita. Three key skills they defined actually, which is you have explained very well. Let me just summarize that. Emotional awareness, including the ability to identify your own emotions and those of others as well. Second skills is the ability to harness emotions and apply them to tasks like thinking and problem solving. And the third is most important, the ability to manage emotion, including the ability to regulate your own emotions and the ability to cheer up the calm down another person's as well. With this thought, Karthik, the time is come to end this talk. Once again, thank you so much to give your valuable time today for this talk. We have done it after, I think, 2 3 months. Earlier, we done it 4 5 talks, and today again you give this opportunity. Thank you so much. Also, I would like to thanks to my all viewers, uh, those who are a part of my this spiritual talks YouTube channel, as well as the people those who are the social media family, and lot of people joined with me in the live talks today, Karthik, and it is very good response I have seen on the Facebook, and I am looking the some questions around it, as we have done a lot of talks and we will continue for this to the people, because the aim is to have the simplify of the spirituality to the people in a common life. So that was the whole thought, and uh, now the time to wrap up this session. And once again, thank you so much viewers. We will see you in another talks. Thank you, Karthik. Thank you, Tribun. Thank you, viewers. Love you so much. Okay, bye bye. Bye.